this was the topic that I have already continued from my M.Phil studies. So I have done more or less 3 to 4 taxonomic characterization of indigenous fish fauna of Gilgit Baltistan. Mostly, sir, this is taxonomic and iterative validation of indigenous fish fauna. And I selected the region, the most appropriate region, which is considered the hotspot for indigenous. That is the Baltistan region and Lashari National Park. इसको ब्रैकेट में से निकाल देना है फिर आपका टाइटल ब्रैकेट में आ गया गलती से ठीक है आपकी मिस्टेक है उधर आ गया So these are the contents sir. So overall the EQ fauna of Pakistan, as you know that there are more than 200 species more or less are present in freshwater fishes. And out of these species, the Gilgit-Baltistan have only 17 fish species, which are considered to be indigenous fish fauna of Gilgit-Baltistan. On the basis of this equatorial distribution, overall the Pakistan has been divided into these 5 provinces. These are the equio-geographical provinces. Fisheries profile, the fish fauna of Gilgit-Baltistan is 29 numbers fish species, and out of these 29 number fish species, the recorded fish species which are not validated yet, these are the indigenous fish species are 17 numbers. Others are the culturable fish species and the exotic fish species which are introduced in GB for culture or for game fisheries purposes, sir. Next. The fish fauna of Gilgit-Baltistan, the fish fauna is I already told that total 29 fish species, 17 species are the purely local or indigenous fish species. And mostly the aquaculture point of view, we are saying that 2 distinct regions are found in Gilgit-Baltistan, that is the pure cold water and the cool water also. These are the only 4 families found in Gilgit-Baltistan. Next. These are the species that I have written this is mentioned is the recorded fish species, not validated yet, sir. No, any one of the fish species is validated through the genetic characterizations. These are the snow trouts, sir. These are the local fish species that are introduced from Pakistan and from the other countries. These are and these species purely introduced on aquaculture basis last year, 2023 and 22. And the biodiversity hotspots, sir, that I have already mentioned that, you know, sir, there's more than 70% the fish resources of Gilgit-Baltistan have covered the invasive species of trout fish species. So now only 20 to 30% of the whole water resources are they are the distinctive regions for the indigenous fish species, which are declined day by day due to the commercial exploitation of trout species. These are the 4 regions, hotspots, which are considered the hotspots. Indus River and Indus River is Shok River, Shigar River, Gultri, Devsai Plateau, Satpara and Shangila Lakes, some of the high altitude lakes which are considered the hotspots, and the Darel near the Amar Basha Dam. There is a distinct population of still found in these Diamar Basha Dam. GIS base, the first one is that GIS based multi-parameter analysis instead of study sites. This is a software based technology, GIS based, and LULC based technology, that is land use and land cover based technology, which is performed through the GIS specialist. So this one, 4 components of GIS based, elevation based data collection,
Next कर लें. और water bodies mapping. In the GIS mapping, we cover these categories. Water bodies mapping, GIS mapping. Catchment area mapping is also a component of GIS mapping. Identify changes in shoreline changes. So delineation shoreline changes for the last 20 years also covered in this GIS mapping component, sir. Taxonomic validation. This is the key point, sir. The key factor which is based for my topic, sir. As I have already mentioned, there's 17 recorded fish species, indigenous species, sir, which are not recognized through, not validated through genetic based technology. So in this research study, I'm going to perform this validation through genetic based validation of fish species. Nutritive validation is also a part of a component of my PhD topic. Next slide. So these are the two prime objectives, sir. Now the baseline inventory, sir, forming on the basis of this research study, we may constitute a baseline, may establish a baseline inventory for equivalent diversity of Gilgit-Baltistan, sir. Investigation on genetic-based taxonomic validation of Baltistan region. Baltistan region and Devsai National Park mostly covered the 70% of fish population, indigenous fish population of Gilgit-Baltistan, sir. So that is the purpose that we selected these two regions, sir. And specific, these are the specific, sir, objectives. Develop GIS mapping of the study area, water quality analysis, sir, study morphological, meristic characteristics, taxonomic validation, and also, sir, examine and evaluate the nutritional composition, which are already genetic validated, sir, species. Parts of the research we have already mentioned. Our first seminar, in the first seminar, sir, I have done these activities, sir. GIS mapping of that one study area, water quality parameters, some desired rivers, morphomatic and meristic characterizations, sir, or resultant number of fish sample have been morphologically identified, sir. And sample collection, preparation, transportation, data analysis for genetic validation. That was my first seminar activities, sir. Material and methods, sir, which we discuss further, sir. This is the description of my study site, sir. These are the Indus rivers, sir. 4 core zones are focused in this study, sir. Indus River, mainly whole stretch of Indus River, both in Sikardu and Kharmang district. And the Shiok River, sir. Shiok River basically is a tributary of Indus River, sir. So we select the Shiok River, and the Shiok River is a main hotspot of the indigenous species, sir. Devsai National Park, sir, Shatong, Bada Pani, Kala Pani, these 3 major rivers, sir, are flowing in Devsai National Park, and remaining the Gultri River is in the Gultri range, which is connected to this water. All the 4 major rivers, the water from these rivers are going to the first enter the Indian. मैप पर दिखाऊंगा सर. आगे मैप की तरफ आ जाए. समझ में ये मैप पे बता दीजिए जो जिस तरह की चीजें हैं ना. हाँ, फिश सिलेक्ट किया कलेक्शन और प्रिपरेशन ये थी सर. मैप पे लिखा हुआ है. मैप हमारे लिए ज़्यादा इजी है. मैप पे पेंट कर दें. These are the stock identification of Indus Basin or Shiok River. These are taken in the 8 July 2023, sir. This is the main confluence Indus and Shiok River, sir. Point. Water quality parameters has been done through this multi-parameter meter, sir. And these are the water quality parameters have been taken, sir, during the study period. And the GIS-based multi-parameter GIS expert has been engaged, sir, for these type of activities, and they covered all these, the elevation-based mapping, these topics. Or identification of mesh fishes through these standard keys have been done.
These are some of the morphometric characteristics. Next slide. Morphometric deoside fishes. Next slide. Or Indus River ranges, morphometric Shiok River. Next slide. This is the genetic analysis, sir. These are samples, sir. The genetic analysis, sir. Sample collection and preparation is being done in the field, sir. Then we have been transported it from this sample to the designated lab, sir. Is being based a private lab, which is Islamabad, sir. And all the samples gone through their lab, sir. So these are the activities, sir. Next slide. Fish sample tagging, sir, at Deoside National Park. These are the activities, sir, because we have to work hard for sample preparation, sir, especially when we are working on the genetic fish samples as well as the nutrition fish samples. तो एक तो इसमें सर वो जो प्रिजर्वेटिव मेथड जो है ना, प्रिजर्वेशन कोई सॉल्यूशन इस्तेमाल करना नहीं होता है, ना आपने फॉर्मलिन इस्तेमाल करना है, ना कुछ और इस्तेमाल करना है। क्या जस्ट क्या किया सर नॉर्मल स्लाइन में ना, जेनेटिक जो सैंपल है वो नॉर्मल स्लाइन में, और ये जो न्यूट्रिशन जो सैंपल है ना सर, तो हम कोशिश करते थे कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी डीप फ्रीजर में हम पहुंचा दें और डीप फ्रीज कर दें उसको, और अगले 1 या 2 दिन में फ्लाइट के जरिए से इस्लामाबाद पहुंचाएं। आधा लीटर किसी से लिक्विड नाइट्रोजन ले आते? लिक्विड नाइट्रोजन आइस फ्लैक्स और लिक्विड नाइट्रोजन का प्रोसेस हो सकता है सर, ये हो सकता है। अच्छा, वो लेके जाना मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल होता है सिक्योरिटी रीजंस की। एक दफा फ्लेक आइस से मैंने जो लिक्विड आइस जो होता है ना सर, पैक जो होता है, उससे मैंने कोशिश की थी, तो लेकिन वो कोई सेफेस्ट तरीका नहीं हुआ। यस, आई थिंक पूरी वर्ल्ड में जो सबसे फास्ट तरीका है वो लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि आपने सैंपल लिया और आपने सीधा लिक्विड नाइट्रोजन में डिप किया, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वो फ्रीज हो गया। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड सारे एंजाइम्स डीएनए सब वहीं पे प्रोटेक्टेड हो गए। और लिक्विड नाइट्रोजन में एक होती है छोटे से, जैसे हम दूध के लिए नहीं वो डालते, ऐसे छोटे छोटे से बने होते ब्लॉक्स, वो आप उसको अंदर यूं करके डालते जाते राउंड एंड राउंड एंड राउंड, तो अंदर लिक्विड नाइट्रोजन होता है, तो वो बहुत ज्यादा इजी। ये आपसे सही कहते हैं सर, क्योंकि ज्यादातर मैनुअली जो डेटा हमारा जो खराब हो गया ना, हाँ, ये इसकी वजह से लिक्विड नाइट्रोजन पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं। बहुत अच्छा है, आपको कराची से किसी भी सप्लायर से मिल सकता है। आप एरोप्लेन के जरिए उसकी बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन बहुत हैजर्डस है। बहरहाल गुड, एग्जैक्टली। आप अच्छा, ये जो मेथड जो डेजिग्नेटेड लैब है सर, जो रजिस्टर्ड जो लैब है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ से हमने सारा डेटा सर वहाँ पे हमने दे दिया था, और वहाँ से हमने sent the sample and analyzed according to the standard method. स्टैंडर्ड मेथड सर, जो ऑलरेडी हमारे हैं। एग्जैक्टली सर। ये क्वालिटी चेकिंग ऑफ डेटा और एडेप्टिव रिमूवल, नेक्स्ट करने, और ये एनोटेशन ऑफ असेंबली एनोटेशन सीक्वेंस के साथ ही जाके ब्लास्ट करना। तो जब वो नेक्स्ट में उसमें बताया है फिगर्स में, एग्जैक्टली सर, फिगर में हम उसमें इजी साइन की बात है कि इससे इजी समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट कर लें सर। सर वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, ये हमने 12 और 13 जुलाई को जब हम गए थे और 3-4 दिन के लिए, तो ये हमारे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स थे सर, एलिवेशन बेस्ड हमने किया था। नेक्स्ट कर लें। और ये जो ना वाटर शेड मैपिंग सर, वो जो स्टडी एरिया है उसकी फिर वाटर शेड मैपिंग सर हमने कोशिश की है उसको ब्रॉडर तरीके से करने। ये सर ये 3 मेजर रिवर्स, शतोंग, बड़ा पानी और ये गुलतरी रिवर का, ये आप देखें सर, ये वाटरशेड मैपिंग स्टडी मैप है सर। ये इसको अंदर रख के फिर निकालते हैं ना, मैप के अंदर रख के निकालते हैं। अब जैसे वो लिखा हुआ है ना, वो जो ऊपर आपके, तो क्योंकि मैप के अंदर से नहीं निकाले गए, अंदर से जैसे हम छोटा सा सर्कल लगा के निकालते हैं कि मैं ये दिखा रहा हूँ, तो मैं बाहर का हूँ, मुझे पता नहीं कि रिवर कहाँ से निकली है, वो पूरा पाकिस्तान का मैप वो पूरा ऊपर निकाल के रेड सर्कल लगा के कि यहाँ पर है। अच्छा, ये जो एक तरह से हमने वो जो 3 रिवर्स की काम किया है उसको हमने जो फोटोग्राफ्स हमने दिए, शतोंग रिवर है, और ये हमारे डॉक्टर साहब जो है चेयरमैन साहब वाटर प्लांटिंग की कलेक्शन कर रहे थे, और बड़ा पानी ये अभी तो इसके ऊपर वो RCC ब्रिज है,
गुलतरी रिवर। सर ये 3 हमने कवर किया। नेक्स्ट कर लें। मैं भी साथ था, पर मेरा नाम नहीं ले रहा। चेयरमैन को राजी कर रहे तो हैं। जल्दी में ना वो स्टडी हम सब की काट दी सर, चेयरमैन की मैंने देखा है, पिक्चर काट ली है। अब देखो आगे चलो, सही है। आई थिंक यू हैव डन गुड थिंग, क्योंकि वो स्टडी से ताल्लुक है उसका। वाटरशेड डेरिवेशन नेक्स्ट कर लें सर। मैं ये सर को मैं कुछ छोटी सी चीज में दिखाना जा रहा हूँ। हम ना मेन पॉइंट्स बताते जाएं ताकि हम आप अच्छा उसमें जेनेटिक्स पे जाए। सेमिनार का मकसद है हम आपको फीडबैक दें। फिश की वाली इसको किया, इसको ओवर करें आप, वो जेनेटिक्स रिजल्ट ताकि हम आपको फीडबैक दे सकें ना। हाँ, ये जो जीएस है उसके कहाँ से क्या जो है। हाँ ये यहाँ से ये सब samples, these are the samples sir. We have collected sample code, local name और collection point, major components ये हमने ये है सर। नेक्स्ट करें। और सर सीक्वेंसिंग के बाद एनसीबीआई में हमने ब्लास्ट किया था, यहाँ डॉक्टर यूनुस साहब और डॉक्टर पुरन साहब की मौजूदगी में हमने ब्लास्ट किया सर। और ये हमारे पास रिजल्ट आया। इसकी बैक में जाए आप, वो स्टेप जो पता है ना पहले वो बता दो। बैक में हाँ ये स्टेप बता है ना पहले बता दो, फिर वो नेक्स्ट में इजी हो ये सर एनसीबीआई ऑनलाइन ब्लास्ट रिजल्ट सीक्वेंसिंग हमने करवाई सर। सीक्वेंसिंग करवाई और उसके बाद जो सीक्वेंसिंग का जो रिजल्ट था सर उसको हमने एनसीबीआई ऑनलाइन इस्लामाबाद जी इस्लामाबाद ले तो कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम सर बाहर से कराते हैं। उन तमाम जीन्स का कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम स्ट्रक्चर हमने बनाया सर। होल जीनोम सीक्वेंसिंग डिस्क्रिप्शन वो आगे सर हमने दी है। और होल जीनोम बेस्ड कंपोजिशन यानी जीसी कंटेंट जिसे कहते हैं सर वो ऑलरेडी हम मेंशन कर रहे हैं। होल जीनोम नंबर्स, प्रोटीन कोडिंग जीन्स और ये ट्रांसफर और माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए और जीन और डी लोब कंट्रोल रीजन सर ये ऑलरेडी एक टेबल में हमने दे दिया है। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है अदर स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ दीस। अभी आप जाएं ये हाँ ये ब्लास्ट रिजल्ट है सर। और इसमें ये सर स्ट्रक्चर है। ब्लास्ट रिजल्ट में आप देखें सर हमने उनको जो सीक्वेंस जो हमने की थी ना सर उस वक्त उनको हमने नहीं बताया था कि ये कौन सी स्पीशी है, हमें भी नहीं पता था। तकरीबन 3 से 4 साइंटिस्ट ने सर जिसमें डॉक्टर रमजान गिजर साहब, डॉक्टर रफीक साहब और अदर साइंटिस्ट ने 17 स्पीशीज डिफरेंट नाम दिए हैं सर। डिप्टाइकस को किसी ने डिप्टाइकस पाकिस्तानिकस नाम दिया है, किसी ने कुछ और नाम दिया है, यानी डिफरेंट मॉर्फोमेटिक। यस आई थिंक इज इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी गुड। तो अभी हमारे पास सर ये एग्जैक्टली ये रिजल्ट आया सर। ये जो आप देखें सर ये 97% हमारी जो स्पीशी है सर दिस इज द डिप्टाइकस मैकुलेटस ये वैलिडेट है। अच्छा जो आपकी भी इवन स्पीशी है उसके साथ भी 98 पॉइंट समथिंग है। इट्स 97% exactly. So it's not even 100%. So there's a difference. Similar से हो सकती है। Similarity 90 plus 95 plus होना चाहिए। 95 plus होनी चाहिए। I think a little bit changes. नेक्स्ट कर लें सर। इसका जो जीन का जीनोम स्ट्रक्चर सर माइटोकॉन्ड्रियल जो जीनोम स्ट्रक्चर इसमें जो बेस पेयर्स थे सर 16,000 मोर देन 16,000 उनको हमने स्ट्रक्चर बनाया सर। और ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग डिस्क्रिप्शन है सर। ये पूरा नहीं आ रहा था तो हमने छोटा सा, लेकिन जब वो फाइनल स्टेज में हम जाएंगे तो सर उसको पूरा एक अलग-अलग हम सर। ये आप देखें जीसी कंटेंट 45% और लेंथ उसका जो बेस पेयर की जो टोटल जीनोम का जो लेंथ था 17,239 इसमें से ए सी जी और पीयू बेसिस के जो रिजल्ट है सर काउंटिंग और परसेंटेज। और ये जो है सर होल जीन नंबर्स ये थे प्रोटीन कोडिंग जीन्स और ये सब ये हमने आइडेंटिफाई किया। कितने मिले हैं ये सारा हमारे पास जो जीसी जो काउंटर है ना सर उससे हमें अंदाजा हो जाता है। ये सारा वेरी मच जो ऑनलाइन जीसी काउंटर के अंदर कैलकुलेटर के अंदर आप जाते हैं तो वो फिर आ जाता है। ये जो स्पेशली है सर उसके बाद ऑल दीज वैलिडेशंस जेनेटिक वैलिडेशन के बाद ये वाली स्पेशली है सर। नेक्स्ट कर लें सर। ये कुछ थोड़ा सा हमने एक बैकग्राउंड उसमें दे दिया है सर कि उसकी स्पेशली को कहाँ ये सर तिब्बतियन प्लेटों में भी है और चाइना, इंडिया, नेपाल और ये पाकिस्तान में सर। नेक्स्ट कर लें सर। दूसरी जो हमारी स्पेशी थी सर वो देवसाई वाइट के नाम से, लोकली वहाँ के लोग कहते हैं सर देवसाई की सफ़ेद मछली। पहले वाली को सर काली मछली कहते हैं, इसको सफ़ेद मछली कहते हैं। तो हमने वो कन्फ्यूजन से बचने के लिए उनका लोकल नाम रखा है सर।
और डेटा बैग में क्योंकि वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने किसी ने टाइकोबार्बस कोनिरोस्ट्रिस किसी ने कुछ और दिया था। और डेटा बैग में 2 में देख रहा हूँ 100% भी है। हाँ 100% भी है सर, लेकिन वो कम है, ये हो सकता है, स्कोर कम है, इट्स कम। हाँ हो सकता है, कोई इशू नहीं। ये सर कंप्लीट जीनोम स्ट्रक्चर है इसका, और ये डिस्क्रिप्शन है सर सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट टाइम करने ये सर इनका लेंथ बेस पेयर्स और ये जीनोम जीन नंबर है, और ये जो मछली है सर एक्यूरेट हमारे पास ये मछली है। नेक्स्ट कर लें सर। बस हाँ कंक्लूजन पे चलो सर। अच्छा ये इस स्पीशी का मैं बता दूं सर, ये ट्रिप्लोफाइसा लोच, इसको ये ट्रिप्लोफाइसा लोच, इवन ये ट्रिप्लोफाइसा नहीं है सर, आज तक हम अपने रिकॉर्ड के अंदर ट्रिप्लोफाइसा स्पीशी डिक्लेयर करते हैं। ब्लास्ट किया तो वो नहीं निकली। अब वो जो ब्लास्ट के बाद मैंने नाम चेंज कर दिया सर, ये तो उस वक्त था जब मैंने वो सैंपल लिया था ना। ये देखें सर बार्बाटूला। नेक्स्ट कर लें, ये उसका जीन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कर लें आप, ये नेक्स्ट कर लें सर। ये अभी इसका ना ये न्यूली रिकॉर्डेड स्पीशी है सर, ये गिलगित बल्तिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर नई स्पीशी है। बस आप कंक्लूजन पे आ जाए, क्योंकि आपके ना जो है रिपीटेटिव रिजल्ट्स हैं तो हम अंडरस्टैंड काफी कोशिश कर दिया है। नेक्स्ट कर लें, ये फ्यूचर वर्क है सर, बस ये नेक्स्ट कर लें। और ये कुछ रिवर्स है सर उनका, फिर जिस तरह देवसाय नेशनल पार्क का जीएस मैप किया इनका हमने बनाना है सर, कोर जोन्स। ये कुछ जिले हैं सर हाई एल्टीट्यूड लेक्स, इनका भी बनाना है, और ये ऑलरेडी सैंपल हमने पहुंचा दिया है सर। ये स्पीशी भी न्यूली रिकॉर्ड हुई है सर, ये हिमालयन कैटफिश, ये नई एक स्पीशी है न्यूली रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूली रिकॉर्डेड सर। ये इससे पहले इसका कोई लिटरेचर में मौजूद नहीं। हाँ नहीं था, उसका रिकॉर्ड नहीं थी उसमें। तो आपने इसको नाम दिया है कुछ? नहीं, ये रेलेवेंट कर रही थी सर मॉर्फोमेट्री बेस पे। मगर कैटफिश तो है, मगर न्यूली रिकॉर्डेड है, तो इसको कोई कैटफिश का सर ये तो बेसिकली ये जो बार्बल्स है ना प्रोसेस में नाम दो इसको, यानी जनरली ये है तो कैटफिश की फैमिली से मॉर्फोमेट्रिक इसके तमाम बट इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई। ये कह रहे ना नई न्यूली रिकॉर्डेड ये होगी ना। Exactly. पाकिस्तान में न्यूली रिकॉर्डेड या इंटरनेशनल कह रहे हो न्यूली रिकॉर्डेड? नहीं सर, पाकिस्तान में तो है ऑलरेडी। पाकिस्तान हम कह रहे हैं सर गिलगित बल्तिस्तान की रीचर्स में कंसेप्ट में ना आपके एरिया में न्यूली रिकॉर्डेड। हाँ, एरिया में न्यूली रिकॉर्ड हो सकती है, जहाँ जो हमारा एरिया था इससे पहले 17 स्पीशीज में इस फिश का रिकॉर्ड नहीं था। नहीं है। You are the first person who says that it is a newly recorded. इसमें वो जेनेटिक का रिजल्ट मैंने नहीं करवाया सर, वो उसके बाद इंटरेस्टिंग होगा ना, यदि आप पूरी दुनिया में दोनों में है। एक ये जो वापस का दिया है ना, वो भी बार्बाटूला का तो कंफर्म हो गया। हाँ वो तो आपने कहा कि आपने ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, 2 स्पीशीज जो होगी वो ठीक है, ग्रेट। ये लिखा है इनकी तो ऑलरेडी वो तो जा चुकी है सर। ये इंशाल्लाह ये कर रहे हैं सर, प्रोसेस में है कुछ प्रिपरेशन पूरा अंडरस्टैंड हो गया। तो सही है।